नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। आज अगेन ऑन योर डिमांड आज दोबारा से हमारे साथ मुफ्ती साहब जुड़े हुए हैं। मुफ्ती जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर शो टुडे। Thank you, Shumit ji, for arrange this live today. Again, also अगेन you have did a past the past live you have did with me. Thank you. यस। तो मुफ्ती जी, ऑलरेडी पीपल हैव लाइक्ड व्हाटएवर यू हैव टोल्ड। पीपल्स आईज वर क्लोज्ड जब उन्होंने आपने जितना ओपनली आपने कल बात किया लास्ट टाइम, तो लोगों ने पसंद किया उस चीज़ को और उनकी डिमांड थी कि आपको दोबारा बुलाया जाए। और एक डिमांड है जो अभी लोग कर रहे हैं कि जो ये इज़राइल का और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिकॉज़ यू कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड, यू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी। आप हाफ़िज़ भी रहे हुए हैं, मदरसा में भी आपने काम किया है, पढ़े भी हुए हैं, आपको हर चीज़ का मालूम है। सो लोग आपका पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं। सो इफ यू आर कंफर्टेबल वी कैन टॉक अबाउट दैट टुडे। Yes, uh, I am I like to say about this subject on ओके, the conflict between Israel and Hamas. ओके, And I think this is not a conflict, but from Hamas, it is a holy war. In Islamic sense, this is jihad against Yehudi. And from Israel, it's conflict or war. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu he declared war against Hamas. Hamas जो radical organization है. But in from Hamas, it is not a war; it is jihad. And the meaning between war and jihad is different. Jihad and war is different because in Arabic language वार का मीनिंग होता है हर्ब हर्बुन अल हर्ब हर्ब मीनिंग वार बट जिहाद नॉट जिहाद का मीनिंग वार नहीं जिहाद का मीनिंग है स्ट्रगल but in Sharia law, in Sharia law and Sharia जो मूल नीति है वो लॉ में है जिहाद तो करना पड़ेगा अगेंस्ट नॉन मुस्लिम पीपल you have to do everything you have to do everything to convert non-Muslim people they if they don't accept your religion you have to fight with them and this is written in Quran and hadith also in Quran in a chapter number 9 verse number 29 Allah का जो मोहम्मद है मोहम्मद said अल्लाह और मोहम्मद तो हमारे पास एक ही है मुस्लिम के पास वो तो अलग अलग चीज है अल्लाह तो क्रिएटर है मोहम्मद is his messenger of God. So in 29 Allah said you have to fight non-Muslim people like Yehudi Christian until they accept Islam or you have to implement jizya on them. Jizya is a very अपदस्थी का एक मामला है अपदस्थ करने के बाद आप अमुस्लिम से नॉन मुस्लिम से कुछ माल लेना पड़ेगा रुपया कुछ माल लेना पड़ेगा ये तो जिजिया है इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो इजराइल हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट का असल है इस्लामिक जिहाद हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमास नहीं एवरीबॉडी यूज्ड टू से हमास बस वो जो ऑर्गेनाइजेशन उनका नाम हमास नहीं उनका जो कागज कलम का जो नाम है कागज कलम में वो नाम हरकतुल मुकावमतिल इस्लामिया इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट वो तो देमसेल्फ दे डिक्लेयर किया जिहाद themselves they identified themselves as jihadist and they said we are doing jihad against Yehudi people not
state of against state of Israel, but Yehudi, because Muhammad, what can I say, Sumit ji? What said Muhammad about Yehudi? Yeah, go ahead. ओके, ठीक है। तो जे जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम था मोहम्मद का कुछ हदीस एंड कुरान का कुछ आया। हदीस में मोहम्मद लिखा गया, मोहम्मद कहा, हदीस तो लिखा गया अनदर पीपल बाय फॉलोअर ऑफ मोहम्मद, बट मोहम्मद ने कहा इन ए हदीस عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود। ये मोहम्मद का एक हदीस है। हदीस का जो मीनिंग है, तो मीनिंग है ये, अबू हुरैरा मोहम्मद का एक सहाबी, एक फॉलोअर था, वो कहा the messenger of Allah said the last hour will not come until the Muslims fight against the Jews, until a Jew will hide himself behind a stone or a tree, and the stone or the tree will say, "O Muslim, there is a Jew behind me, come and kill him." Tree and stone will say, "O Muslim, there is a Jew behind me, come and kill him." But Al-Garqad tree will not say so, for it is the tree of the Jews. Garqad tree, Muhammad said, it is tree of Jews. That is the reason all Muslim, believing Muslim and practicing Muslim, always they want to kill Yehudi people, because Muhammad ordered this. Muhammad ordered his follower to fight even the last Jew on earth. Muhammad ordered the last Jew on earth to be hunted out and killed wherever he was hiding, behind a tree or a rock. And Muhammad said that even trees and stones were ready to assist the Muslim to kill the Jews. There is hadith, a lot of hadith about this subject. But Hafiz, will you tell me one thing? Why is it that they are so specific about the Jews? Is it a hatred for the Jews because they are very successful and they don't accept Allah as their supreme God or something like that? या कुछ और है हिस्ट्री में जिसके कारण ये उसके पीछे पड़े हुए हैं ज्यूज के? ऑलरेडी आप देखिए 270 मिलियन ज्यूज को पिछले 1300 साल में इन्होंने मार दिया। अभी ये चक्कर क्या है? ये चक्कर तो है सुमित जी। Christian people also, some Christian people also hate Jews, and a lot of Christian people in the past era, past history, we know, uh, those killed Jewish people, and the last was Adolf Hitler. He killed a lot of Jewish people, like 60 million, you know. But nowadays, Christian people also, not nowadays Christian, maximum Christian people civilized, and they are not a practicing Christian. Some Christian people, they don't hate Jewish people, but the Muslim, practicing believing Muslim, he have to hate Jewish people, because this is order by their prophet Muhammad. This order came from Muhammad, and a lot of hadith and ayat also in this thing, in Quran and hadith likha gaya, a lot of hadith. No, my question is it specific to Jews or is it like common for everybody but more focus is being given to Jews क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है, उन्हें कंट्रोल करना आसान है। जब इसके ऊपर हम फतेह ले लेंगे then we'll go towards Hindus and Christians. Is that the issue or is it that it is a specific only for Jews? ये जो सारी हदीस है आपकी ये सिर्फ Jews के लिए है कि सबके लिए है?
देखिए, ये तो जो मोहम्मद का जो हेट्रेड है वो स्पेसिफिक ऑन ज्यूज, बट फॉर इन जनरल to all non-Muslim people, because Muhammad ordered Muslim people to convert non-Muslim people or to kill them. Muhammad said, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu Allah ilaha illallah." मेरे जो लॉर्ड है, हमारा जो मोहम्मद सेड, मेरा जो अल्लाह है, अल्लाह मुझे ऑर्डर दिया टू जिहाद, फाइट नॉन मुस्लिम पीपल until they accept Islam. दिस इज ऑर्डर फ्रॉम मोहम्मद। मोहम्मद का अल्लाह का ऑर्डर, ये मींस मोहम्मद का ऑर्डर टू ऑल मुस्लिम्स और ऑल हम्म। बिलीवर्स, but तो especially for Yehudi people, because a lot of hatred and a lot of ayats and hadiths Muhammad said, Muhammad told about Yehudi people especially, and Muhammad said यहूदी जो है वो तो मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके इसके पीछे एक कारण भी है, रीजन भी है। Can I say the reason why Muhammad said like Yes, this? of course. This is exactly what I want to understand. Ki why is it that so specific for Jews the hatred is there? क्योंकि अल्लाह तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बोले कि भाई ये वो सुप्रीम है। अगर आप कहते हैं कि अल्लाह सुप्रीम है, तो सुप्रीम कभी ये नहीं बोलेगा कि ये जो है ज्यूज को आप मार दीजिए। ये कहीं ना कहीं मोहम्मद का भी कोई ना कोई लफड़ा है ज्यूज के साथ, जो उन्होंने डाल दिया इसके अंदर, किताब के अंदर। Before that, Sumit ji, I have to say this point nowadays. This point, जो बायतुल मकदिस है और जो जेरूसलम है, जो तो मुस्लिम दावी करने वाला है, ये तो हमारा रसूल का मसरा है, रसूल यहाँ पर आया नाइट में, इन ए नाइट, एंड यहूदी claims this is our only holy land. तो मुस्लिम का टू होली लैंड है, मुस्लिम जो पीपल है, मुस्लिम का टू होली लैंड है। वन तो मक्का में है, और सेकंड होली लैंड इज मदीना। मुस्लिम का जो टू होली लैंड है, अल हरमैन शरीफैन, टू हरम है। हरम का मीनिंग है पवित्र स्थान, तो टू हरम है। But after that, Muslim people, Islamic people claim बैतुल मकदिस, जेरूसलम जो है वो हमारे लिए है, वो ओनली हमारे लिए, यहूदी का नहीं, यहूदी को नहीं होना चाहिए। किस लिए? जो हमारा जो रसूल है, पैगंबर है, वो ये जगह में आया। बट इन कुरान ए लॉट ऑफ वर्सेस, अल्लाह, कुरान का जो अल्लाह है, द फनी थिंग्स दैट कुरान का जो अल्लाह है वो कहा ये जाएगा यहूदी के लिए। इन कुरान में है, कुरान में नहीं, कुरान में अल्लाह नहीं कहा नहीं ये जगह मुस्लिम के लिए। कुरान में इस्लाम का जो अल्लाह है वो कहा ये जगह यहूदी के लिए। I have to explain and I have to say that those ayat, what is माने what is अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने कहा इन कुरान में, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ। ये आयत का मीनिंग है, and mention, O Muhammad, when the Moses said to his people, Moses का people तो यहूदी है, to say to his people, O my people, remember the favor of Allah upon you when He appointed among you prophets and made you possessors and gave you that which He had not given anyone among the worlds. O my people, enter the holy land which Allah has assigned to you. Enter the holy land which Allah assigned to you, and do not turn back. And become, if you turn back, you become losers. तो अल्लाह के, मोहम्मद का जो अल्लाह है वो यहूदी पीपल
से कहा, यहूदी पीपल को कहा, you have to enter this holy land. This holy land Allah only gave you. Allah give you. This is a gift from Allah to you. You can find this ayat in chapter number 5, verse number 20 and 21. And another ayat is, Allah ने कहा कुरान में, या बनी इस्राईल कद अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम व वाअदनाकुम जानिब अत-तूरिल अयमन व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा. O children of Israel, we delivered you from your enemy, and we made an appointment with you at the right side of the mount, and we sent down to you manna and salwa. And this ayat is chapter number 20 and verse number 80. I can say another ayat. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. And we caused the people who had been oppressed to inherit the eastern regions of the land and the western ones, which we had blessed. And the good word of your Lord was fulfilled for the children of Israel. For the children of Israel, because of that they had patiently endured, and we destroyed that Pharaoh and his people were producing and what they had been building. This ayat, you can find this ayat in the chapter number 7, verse number 137. Another तो ayat. जो आपका कहने का मतलब है कि जो Hmm. अल्लाह है उसने बड़ा स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिया है कि ये जो इज़राइल का जगह है, जेरूसलम की जगह है, ये यहूदियों के लिए ईयर मार्क्ड है क्योंकि पूरी दुनिया में इनको मारा जा रहा था, तो अल्लाह ने ये जगह इनको दे दिया था। तो अगर Yes. अल्लाह ने ये दिया हुआ है तो गलती कहाँ हो गई कि भई मोहम्मद ने उसको चेंज कैसे कर दिया? अल्लाह के शब्द दैट मीन्स जो कुरान है, वो अल्लाह की किताब नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग मोहम्मद की भी है। ये एक क्वेश्चन है सुमित जी. Firstly, when Muhammad came to Medina, from Mecca to Medina, that time Muhammad wanted to embrace Israeli people, like embrace Yehudi people, and Muhammad wanted offered them to accept his religion, Islam. But and Muhammad tried to make them satisfied, and that's why in tafsir, tafsir का मीनिंग है कुरान का जो एक्सप्लेनेशन बुक है, कुरान का एक्सप्लेनेशन बुक, लाइक तफसीर मारिफुल कुरान एंड तफसीर जलालाइन. इन दो तफसीर किताब में लिखा गया है जी, ये जो मोहम्मद when came to Medina, that time Muhammad turned his prayer direction in Arabic language Qibla. Muhammad turned his prayer direction to Jewish pilgrimage site of Jerusalem as part of pleasing the Jews. Muhammad wanted to pleasing the Jewish people, and he did for 16 or 17 months. Then when he saw that the Jewish people were not satisfied and they didn't accept his Islam, that time Muhammad was very angry against Jewish people, and Muhammad turned his direction, prayer का जो direction है, direction turned to Mecca again from Jerusalem. And this is written in Tafsir Mariful Quran and in Tafsir Jalalain. And the scholars said Tafsir Mariful Quran का जो Tafsir Mufassir है and Jalalain का जो Mufassir है Jalaluddin Suyuti and Jalaluddin Mohalli. Jalalain का जो ये है explainer who said that Allah का Prophet Muhammad wanted to attract the Jewish people to accept his religion Islam, but when the Jewish people, and not only that, to attract them and to
and accept Islam. Muhammad revealed a lot of ayat about Yehudi people and about their जो prophet था मूसा, मोजेस, इन कुरान लिखा गया मूसा। मूसा का जो नाम है कुरान में, मूसा का नाम 136 बार मेंशन किया, 136, बट मोहम्मद का नाम कुरान में ओनली 3 और 4 बार मोहम्मद का नाम कुरान में मेंशन किया, बट इट इज मोहम्मद का किताब है। ये जो वो आसमानी किताब है, मुस्लिम को इद्या के मुताबिक ये आसमानी किताब, और अनज़लल्लाहु अला मुहम्मद, मोहम्मद के पर अल्लाह नाजिल किया। तो ये किताब में मोहम्मद का नाम ओनली 3 और 4 बार मेंशन किया। और ज्यूस का जो नबी है मूसा, उनका नाम कुरान में 136 बार मेंशन किया। एंड Muhammad tried a lot to give his religion to Jewish people, and he wanted to accept those people will accept his religion, but Jewish people challenged Muhammad. You are a copybaz, you तो कॉपी, तू कॉपीबाज है, तू हमारा जो किताब है, किताब में जहाँ लिखा गया तू तो कॉपी किया, एंड तू तो तुम्हारा जो इस्लाम है वो तो हमारे जो तौरात है, तौरात से कॉपी किया। And it is true. That's why Muhammad was very angry on Yahudi people, and he ordered to massacre against them, because and this is the thing. And another thing, okay, another thing is why Muslim people nowadays until this time they are claiming Jerusalem is their holy land, but Jerusalem is not their holy land. And the thing is, Muslim people used to say in Bangladesh and Pakistan and India, and most of the Muslim people, they don't have knowledge that Jerusalem का जो Al-Aqsa mosque है, Al-Aqsa mosque built by Umar ibn Khattab। मोहम्मद के बाद एक खलीफा था, उनका नाम है अबू बकर। अबू बकर के बाद और एक खलीफा थी, उसका नाम है उमर। तो उमर हैज बिल्ट दिस मॉस्क। Muhammad, Muslim people used to say Muhammad in Isra किया, Isra meaning night, नैश भ्रमण, night travel। In a night Muhammad traveled from Makkah to this place, Masjid Aqsa, यहूदी का जो प्लेस है, पिलग्रिमेज जो प्लेस है यहूदी का, वन होली लैंड, वो प्लेस में मोहम्मद आया 1 नाइट में। एंड दैट्स व्हाई मोहम्मद का कदम मुबारक, मोहम्मद का पा ये जगह में रखा गया। दैट्स व्हाई मुस्लिम पीपल यूज्ड टू से दिस प्लेस ओनली फॉर अस, बट Israel government allowed Jordan Sarkar to to direct this mosque, Jerusalem city under Israeli government, Jerusalem city in Israel, but the mosque, Al-Aqsa mosque, for peace purpose, for stability or establish peace, Israel government Al-Aqsa जो मॉस्क है, मॉस्क को जॉर्डन सरकार को दे दिया, ये हम तुमको दिया, तुम इसको डायरेक्शन, इसको जो तत्वावधान अरबी में कहा गया तो मुतवल्ली, तुम इसका मुतवल्ली है, तुमको इसको देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट, ये तो इजराइल सरकार का एक काम है। आफ्टर दैट मुस्लिम पीपल, माने extremist Muslim people, Islamic people is not satisfied, because हम तो ये सिटी चाहिए, whole Jerusalem सिटी चाहिए, एंड यहूदी पीपल को हम ये सिटी में एंटर करना नहीं देना है, बिकॉज यहूदी कुरान में मेंशन किया इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक काफिर जो है, काफिर तो नापाक है, कुरान में लिखा गया काफिर नापाक है।
फला यक़रबुल मस्जिद अल हराम, वो तो मस्जिद हराम के नजदीक आना नहीं चाहिए। ये तो कुरान में लिखा गया ना। हम्म। ये प्रॉब्लम है। एंड द तो प्रॉब्लम, हाँ। तो हाफिज साहब, आपके हिसाब से जो मैं सारी बात को समझाऊं अभी तक, जो आपने बताया है कि ये अल्लाह की दी हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये मोहम्मद की अपनी ही एक प्रॉब्लम है जो उसने दुनिया के ऊपर डाल दिया कि भाई ज्यूज ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, मैंने सब कुछ करने की कोशिश करी। और दूसरा, जो इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने कुरान को फ्रॉम यहूदियों, तो इसलिए उनको खत्म करने की बात करते हैं। दैट मीन्स ये एक सिर्फ लैंड का इशू नहीं है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये इट इज यस इट इज अ लैंड इशू एंड ऑल्सो अ रिलीजन इशू ऑल्सो। तो दोनों चीजें इकट्ठा हो गया कि क्योंकि जो मुसलमान है, सुमित हमने जी, ये भारत मेरे पास तो ये ओनली रिलीजियन इशू है, लैंड का इशू नहीं। ये तो रिलीजियन इशू है, नहीं, आपने क्योंकि बोला ना, जैसे आपने जैसे बोला कि हम्म, इनको जो इनका मॉस्क था उसकी जगह दे दी, उसका हम्म, कंट्रोल भी जॉर्डन को दे दिया, फिर उसके हम्म, बाद इनको सेटिस्फाई होना चाहिए था। तो ये बोलते हैं कि यस आई अंडरस्टैंड व्हेन यू से कि भी ये रिलीजन का इशू है क्योंकि बुक में लिखा है। लेकिन जब हम्म, इनको जगह अपनी अलग से मिल गई, उसके बाद भी इनको पूरी जगह चाहिए। जैसे भारत के अंदर भी हम देखते हैं हम्म, कि जो हमारा अयोध्या है, उसके अंदर उठा के इन्होंने वो बाबरी मस्जिद डाल दी हमारे मंदिरों के ऊपर। काशी हमारा बहुत बड़ा एक स्थान है हिंदुओं का, जैसे आपका मक्का मदीना है, वैसे हमारा भी ये मक्का मदीना है हिंदुओं के लिए। काशी, अयोध्या, हम्म, मथुरा, सबके अंदर इन्होंने अपनी मस्जिद बनाई हुई है और हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं है वहां पर। वहां पे दुकानें भी सारी इन्होंने कैप्चर की हुई हैं। इनको 100% कंट्रोल चाहिए हर जगह का। अभी केदारनाथ है हमारा, बद्रीनाथ है, वहां पर हम्म, भी 40 to 50% मुसलमान वहां पे रहने लग गए, जबकि वहां पे मुसलमान की पॉपुलेशन 10-15 साल पहले जीरो थी। सारी दुकानें मुसलमानों ने ले ली, और जब वहां पे हिंदू जाता है उसे मुसलमान की दुकान से ही सामान खरीदना पड़ता है, क्योंकि हिंदुओं को इन्होंने हमारे अपने तीर्थ जगह से भी भगा दिया। तो आई अंडरस्टैंड कि ये रिलीजियस इशू भी है, प्लस टेक ओवर, जो पूरा लैंड को ये टेक ओवर करने की बात करते हैं हर जगह पर, वो भी इशू है। है। ये तो इस्लाम का एक इशू है ना। इस्लाम तो एक रिलीजियन है, वो तो धर्म के मुखोश मुखोश से अंदर एक रिलीजियन है। हम्म, इस्लाम, सॉरी, एक पॉलिटिक्स है। इस्लाम का जो पॉलिटिक्स है वो तो मेरे एक प्यारे मेरे फेवरेट राइटर का नाम है हामिद अब्दुल समद। ही इज फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्शियन एक्स मुस्लिम राइटर। वो एक बुक लिखा गया, बुक का नाम है इस्लामिक फैसिज्म। In that हम्म, book he wrote a lot about मोहम्मद का जो कैरेक्टर था, मोहम्मद का कैरेक्टर क्या है, मोहम्मद। एंड he said in that book Muhammad was a very worst than Adolf Hitler। माने ही कहा जे एडल्फ हिटलर हिटलर भी मोहम्मद से बहुत अच्छा लोग था। हिटलर भी मोहम्मद से बहुत अच्छा लोग था। मोहम्मद बहुत बुरा लोग था। ये बुक में वो लिखा गया। वो बुक में ये बांग्ला बांग्ला भाषा में ट्रांसलेट किया ऑल्सो, एंड इट इज अवेलेबल इन पीडीएफ वर्जन इन ऑनलाइन। ओके, तो जे माने फर्स्ट यू हैव टू आई हैव टू से सुमित जी, द फर्स्ट इंसिडेंट जो मोहम्मद से हुआ अबाउट ए जेरूसलम एंड अक्सा, जो इंसिडेंट का जो स्टोरी है, वो स्टोरी बहुत दिलचस्पी स्टोरी है। कैन आई से दैट स्टोरी? गो अहेड। एंड दिस स्टोरी written by Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, he was the first मोहम्मद का जीवनी का फर्स्ट राइटर, biography writer of Muhammad. His name is Ibn Ishaq. He said in his book, he said وكان فيما بلغني عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها هند في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيته। लंबा एक नरेशन है। तो this is the first story, this is the
final story, and this is the story of, and this is the reason also, reason of conflict between मुस्लिम का जो जिहाद है, जिहाद का between ये only one reason है, and the conflict between Muslim and Islamic jihadist and Israel government, because this is first story. Muhammad was at the time in the year 621 in Arabic Rajab month, 26th Rajab month. At the night time, Muhammad went to his cousin's room, cousin's home. That time मोहम्मद का जो cousin थी, उसका नाम है, नाम उम्मे हानी, उसका नाम और एक नाम है हिंद. Maybe in Saudi Arabia at the time, at the period of Muhammad, a lot of people can नाम था हिंद, like Hindustan. I don't know what is the reason, but हिंद. तो हिंद जो महिला जो मोहम्मद का काजिन था, वो हिंद मोहम्मद का चास्तबन, मोहम्मद का जो चाचा है, चाचा का डॉटर. So in first time, Muhammad asked his chachaji to marry with him his daughter Umme Hani. But Muhammad का जो चाचा अबू तालिब ने refuse किया. After when Muhammad का first wife Khadija died, Muhammad at that time Khadija died. Muhammad is single. Some Islamic scholars say Muhammad ka that time was another Muhammad married to another woman named Sauda. Okay, but Khadija died. After that time, Muhammad in the night time went to his cousin's home. Her husband wasn't present in that home that time, and Muhammad always be attracted to that woman, and that woman Umm Hani also loved Muhammad, and he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loved me, and I also loved him. I loved him a lot. This is written in Hadith and Sirah kitab. So at the time when Muhammad in whole night he stayed with Umm Hani. Umm Hani said, "Wabata indi tilka layla." At the time Rasulullah was with me. Umm Hani at that time not Muslim. She accepted Islam after Fateh Makkah. Makkah का जो मोहम्मद जब मक्का कब्ज किया, after that time Umm Hani accepted Islam. But this incident was when Muhammad was in Makkah. Muhammad didn't come Medina. Muhammad didn't enter Medina. At that time, Muhammad entered in the night time Umm Hani ka home. And that time Muhammad whole night stayed with Umm Hani. But Muhammad feared if the society have knowledge about what I did, then maybe they will not accept me as prophet of Allah. That's why Muhammad said, in whole night I was traveled to, in this night I was traveled to Jerusalem, Al-Aqsa Mosque, and Al-Aqsa meaning Durbarti Masjid, far mosque, Far away. far away. Al-Aqsa means far away. Al-Mosque far away mosque. This Al-Aqsa doesn't mean यहूदी का जो पिलग्रिम्स वो का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो का रिप्रेजेंट नहीं किया. Okay, there is another subject. Muhammad was whole night with his cousin Umm Hani, and after that night Muhammad said to his followers, I was in night, I had a night journey to Al-Aqsa, Jerusalem, Al-Aqsa, and also I met Allah. I Mi'raj. एक तो सब्जेक्ट है इसरा का मीनिंग है नाइट ट्रैवल. तो मोहम्मद इसरा किया मक्का से जेरूसलम तक, एंड आफ्टर दैट मोहम्मद मि'राज किया. मि'राज का मीनिंग है जो ऊर्ध्वारोहण, ऊपर में जाना है. तो मोहम्मद मि'राज किया, अल्लाह के साथ मुलाकात किया, अल्लाह के साथ उनका डिस्कस भी हुआ,
मोहम्मद जन्नत जहन्नम भी देखा, मोहम्मद के साथ ए लॉट ऑफ प्रॉफिट्स भी मोहम्मद के साथ मीट किया, लाइक जीसस, मोजेस एंड all the prophets, they met Muhammad. When Muhammad said this thing to his follower, a lot of Muhammad's follower didn't believe, and some Muslim people was murtad. But that time Muhammad was not king, was not ruler. That's why Muhammad didn't punish them. In Muhammad का जो रूल है, मोहम्मद का रूल में, if you leave Islam, I have to kill you. Only one punishment. If you leave Islam, I have to kill you. But that time Muhammad didn't kill them, because that time Muhammad was not ruler. And after this incident with Hani, Muhammad implemented 5 prayers in a day and night. You have to pray 5 times. 5 वक्त नमाज फर्ज किया मोहम्मद ने. The some before that time I was thinking, why Muhammad 5 वक्त नमाज फर्ज किया in that night? What is the reason? But some days ago I found this, maybe in that night मोहम्मद उनका जो लवर तो उम्मे हानी के साथ में भी 5 बार वो काम किया जो तो हम some people उसका जो लवर के साथ किया ना. मोहम्मद में भी उम्मे हानी के साथ 5 बार किया. दैट्स व्हाई मोहम्मद उम्मत के ऊपर, मोहम्मद का जो फॉलोअर के ऊपर 5 बार नमाज फर्ज किया. यू हैव टू प्रे 5 टाइम. आई डोंट नो, बट मे बी. So this is the only reason. And after that Muhammad said, I have some hadith about this subject. And Quran में कोई specific mention नहीं किया. Only surah Isra में one ayat, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladhi barakna hawlahu. अल्लाह बहुत पवित्र है, जो अल्लाह मोहम्मद को नाइट में मक्का से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक नाइट ट्रैवल किया. नाइट ट्रैवल कराया. तो ये तो उस सूरा में कहा गया. खत्म. ओनली दैट रीजन. मोहम्मद एक, हमारे जो बांग्ला भाषा में कहा गया तो आकाम करेছে, आकाम किया. एंड आफ्टर दैट ऑल मुस्लिम पीपल यूज्ड टू बिलीव नाउएडेज आल्सो दैट मोहम्मद, इस्लाम का जो किताब है, किताब में लिखा गया मोहम्मद वो नाइट में उम्मे हानी के साथ थी. उम्मे हानी के साथ. मुस्लिम पीपल यूज्ड टू से नो, मेरे जो रसूल है, रसूल तो उम्मे हानी के साथ, उम्मे हानी को घर में गया था, बट वो उम्मे हानी के साथ कुछ नहीं किया. उम्मे हानी के साथ वो कुछ नहीं किया, बट वो बैतुल मक़दिस में आया, ये जगह में उनका कदम रखा गया, इसलिए हम ये जगह चाहिए. एंड दिस इज द रीजन. ऑल द ब्लडशीट, दिस इज द ओनली रीजन. ठीक है, अब मुझे समझ आ गया कि ये पूरा इशू क्या है. ये फेस सेविंग, मोहम्मद भी अपनी फेस सेविंग चाहते थे, तो उन्होंने ये 5 बार नमाज का भी चूरन दे दिया सबको. लेकिन हम बात वापस लेके आते हैं इजराइल और हमास का. इजराइल का जो ये इशू है पैलेस्टाइन का और इसके अंदर आपके हिसाब से कोई ऐसा, इज देयर अ रूम फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? देखिए सुमित जी, मेरे पास ओनली वन सॉल्यूशन है. ये है कि मुस्लिम का तो पैलेस्टाइन में मुस्लिम का 2 ग्रुप है. एक ग्रुप जो है वो तो फतह, जो वेस्ट बैंक में रूल रूल कर रहे हैं, और एक ग्रुप है वो तो हमास, जो हमास तो नहीं, वो का हमास तो लोगों को मुंह में है. उसका नाम है इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट. हमास के पहले भी और कुछ इस्लामिक जिहादी दल थी, एंड अभी तक वो एक्टिव है. उसका नाम है इस्लामिक जिहाद, अल जिहादुल इस्लामी. तो ये जो अल जिहादुल इस्लामी, हरकत हिजबुत तहरीर, हमास, अल मुकावमतुल इस्लामी, ऐसे बहुत इस्लामिक जिहादी फोर्स है. दैट फोर्स इज दोज ऑल आर एक्टिव इन गाजा.
But in West Bank, you have to discuss with West Bank. Mahmoud Abbas जो पैलेस्टाइन का जो प्रेसिडेंट है, तो Israel can negotiate with him. US and the इंटरनेशनल जो फोर्स है, इंटरनेशनल जो पावर है और राष्ट्र है, वो भी महमूद अब्बास के साथ डिस्कस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं. बट हमास के साथ डिस्कस नहीं हुआ. हमास ओनली टू बी डिस्ट्रॉयड. Hamas only to be destroyed or to be out them from Islam. When Hamas is a true Islamic follower, you know, there is a all over the world some Muslim, they are not true Islamic, true follower of Islam. But there was some Muslim, there is some Muslim, they are true follower of Islam. If cannot discuss or negotiate with true follower of Islam like Al Qaeda, ISIS, Taliban, Harkatul Jihad, Sipah-e-Sahaba, Jaish-e-Mohammad, Al-Shabaab, ऐसा जो है बोको हराम, ऐसा जो organization का जो member है, you cannot discuss with him because they are angry. Like Muhammad was like this, and they are always attacking non-Muslim people, and they cannot think twice. Only they have to attack. This is their belief system, and this belief came from Muhammad and Islam से आया. तो thirdly, तो आपके हिसाब से जो इजराइल आज कर रहा है कि दे आर सेइंग कि हमने हमास को खत्म करना है, इनको बाहर जाने नहीं देना, इजिप्ट का रास्ता बंद कर दिया, सीरिया का बंद कर दिया, जॉर्डन का बंद कर दिया, लेबनान को बोल दिया कि तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करो. देखिए वेस्ट बैंक में हम भी देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से जी रहे हैं. गाजा वालों को ज्यादा ही गाजा बाजा बनाने की आदत पड़ी हुई है. तो आज इनका बॉम्ब फेंक कर इनके ऊपर जो बाजे बज रहे हैं, that means this is the only solution according to you. There is no dialogue which can happen with these Hamas animals. इनको मारना ही एक सॉल्यूशन है. लेकिन आपको लगता है कि हमास के कुछ लोगों को मारने के बाद ये सारी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी? ये तो दोबारा से उड़ जाएंगे. हाँ, दोबारा से हो जाएंगे, ये ठीक है. बट देखिए, इस्लाम के जो बिलीफ सिस्टम है वो तो बहुत गंदी है ना. मोहम्मद ने कहा जो अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक आपको जिहाद करना पड़ेगा, आपको जिहाद करना है. इसलिए लाइक अल जजीरा टीवी चैनल, कतार गवर्नमेंट एंड ईरान एंड कतार, they are strong two countries are strong supporters of Gaza. Palestine का जो militant है हमास को strong supporter, because in the whole world मोहम्मद का जो रूल है, इस्लामी जो शरिया लॉ है, शरिया लॉ के मुताबिक in the world and in every country or in the world, some Muslim people has to do jihad. If some Muslim people don't do jihad, jihad is farz kifaya. Farz kifaya means some people must be do. If no one of Muslim people doesn't do this thing, they all will be sinners and they all will go to hell after their death. That's why Hamas doing their duty as a pure believing system. Hamas and always, Jaish-e-Mohammad, Lashkar-e-Toyeba, Hizbul Mujahideen, this kind of organization. And another kuch Muslim hai, like Qatar government and Irani government, they are supporting, because and a lot of Muslim also in Bangladesh and India and in Pakistan and all over the world, a lot of Muslim they are supporting, because they think this is duty from Allah and we have to support. We cannot enter or we cannot do jihad against Israel or against Indian force or against America, but we have to participate with al jihad bil mali wan nafsi. Islam का एक लफ्ज है al jihad bil mali wan nafsi, जान देने का जिहाद और माल देने का जिहाद.
either if you don't, if you cannot do jihad, or if you cannot enter jihad, or if you cannot go to jihad by your body, by yourself, you have to give them financial support and political support. तो आई थिंक, बट इसराइल इसराइल का जो करना है वो तो हमास हमास और जो कुछ इस्लामिक मिलिटेंट है गाजा में, वो फुल्ली डिस्ट्रॉय करना है। ये मेरे पास वन ओनली वन सॉल्यूशन है। बट इसराइल को जो से सोल्जर है उसको ख्याल रखना पड़ेगा, नो सिविलियन कैन बी अटैक्ड, नो सिविलियन, नो वुमेन, नो चिल्ड्रेन, नो बट हाफिज ओल्ड साहब, एज। नो, हाफिज साहब एक चीज बताइए, जब सारे हमास का लोग वो सिविलियंस के बीच में छुपकर बैठा है बुर्का डालकर, आपको क्या लगता है कि हाउ इज इट पॉसिबल नॉट टू हैव सम सिविलियन कैजुअलिटीज? भी जो हमास ने जो किया वो भी तो सिविलियन कैजुअलिटीज ही है ना इजराइल के अंदर। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है कि भाई वहां पर जो नॉर्मल लोग हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमास को मारना चाहिए? पॉसिबल है ये चीज? ये देखिए, ये मेरे पास इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद वो माने वो इजरायली सोल्जर को ट्राई करना पड़ेगा, हाँ, जो लेस कैजुअलिटी टू द कैजुअलिटी ऑफ सिविलियंस और नो कैजुअलिटी टू द सिविलियंस। बिकॉज हमास का तो कोई रूल नहीं, हमास का तो जंगली, हमास तो मोहम्मद का जंगली रूल फॉलोअर करना है ना। हमास तो Hamas always following Muhammad जंगल रूल ऑफ मोहम्मद। बट इसराइल का जो सोल्जर है वो तो मोहम्मद का फॉलोअर नहीं, उनके पास सिविलाइजेशन है, उनके पास लॉ है, ऑर्डर है। दैट्स व्हाई वी दे हैव बट टू फॉलो द। बट हाफिज, ओके, हाफिज साहब आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन अमेरिका इराक में गया, आपको मालूम है वहां पे उन्होंने लाखों लोगों को मार दिया। अफगानिस्तान में गए, वहां पर लोगों को मार दिया। भी ये जो रूल आप बता रहे हैं कि इजराइल को सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए, अमेरिका को ये पार्ट क्यों नहीं पढ़ाता कोई? नोबडी सेज दीस थिंग्स टू अमेरिका एंड नोबडी इवन क्वेश्चंस देयर मिलिट्री ऑपरेशंस। ऑल मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने कितने लोगों को मारा है, तो ये सारे रूल्स इजराइल के ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं आज की डेट में, जबकि दे आर वुंडेड एंड सो मेनी पीपल हैव बीन किल्ड इन इजराइल लाइक एज इफ दे वर एनिमल्स। जैसे बच्चों को मारा है, लेडीज को मारा है, उनका रेप किया, उन्हें किडनैप करके ले गए। भाई अब ये तो उसके बाद मोहम्मद का, ये तो सुमित जी, ये तो मोहम्मद का सुन्नत है ना। मोहम्मद तो ये इस चीज कहा, एक मोहम्मद किया ना। Muhammad, when Muhammad entered a fiber, I have to say something new. When I saw a lot of videos posted by Hamas or Islamic group, jihadi groups, always I saw a gathering in Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, Israeli city. In Jerusalem, in Al-Aqsa Mosque, a lot of Muslim people, and I have that video also now. They are shouting, they were shouting, Khaybar, Khaybar, Ya Yahud, Jaishu Muhammad Sawfa Yahud. Also, I saw a video in Qatar. Some people, a lot of Muslim people, they are surrounding a mosque, and they were shouting, Khaybar, Khaybar, Ya Yahud, Jaishu Muhammad Sawfa Yahud. What is the meaning of this thing? खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफ याऊद। इसके बीच में एक किस्सा है। इन सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 4197, वो हदीस में है, अनस नरेटेड किया जे अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता खैबर लैलन। मोहम्मद, उसके पास तो रसूल है, तो रसूलुल्लाह रात में खैबर में आया। खैबर का जो एरिया है, यहूदी का एक ट्राइब, यहूदी वो ट्राइब के पास आया। वकाना इदा अता कौमन बिलैलिन लम यगज़ु बिहिम हत्ता युस्बिहा। मोहम्मद when he used to come to do jihad against a people, against a group, so in night time he used to come, and he used not to do jihad
with that people until the morning. Falamma asbaha, when morning come, the Muhammad started jihad. Falamma asbaha kharajat al-yahud bimasahihim wa makatirihim. When the dawn aya, pre-dawn, when Muslim people prayer fajr का जो prayer है prayer किया, and Yehudi people get outside from their home with their जो कोदाल है खेत खमारी के लिए वो बाहर आया. Falamma, at that time Muhammad suddenly uh, attacked he attacked on him with his sword and with his soldier. So he always जो मुस्लिम हमास का जो मुस्लिम है मोहम्मद Hitler Adolf Hitler holocaust किया against Yehudi. I think this is not the first holocaust. First holocaust done by Muhammad when he killed 900 Jewish people, slaughtered him, beheaded them. 900 Jewish people, among them was a lot of children also. Children and women. Muhammad qatl kiya, Muhammad beheaded kiya 900 people, and Muhammad वो people का जो women है, some women Muhammad qatl किया और अक्सर women Muhammad कब्ज किया and Muhammad लोंडी बनाया, लोंडी बनाया, and he distributed among the Muslim people, and the beautiest woman Muhammad catched him and Muhammad raped him. Muhammad raped her. The beautiest woman Safiya bint Huay. Muhammad captured Safiya as a captive, as Londi, and Muhammad raped her. And this is written in Quran Hadith. And this kind of rape and destroy, murder non-Muslim people, this is ordered by Allah and Quran. And Hamas people believe this thing. Muslim, जो मुस्लिम जो बिलीविंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो तो जिहाद करना पड़ेगा. आइदर वो मरना है. इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून. कुरान में अल्लाह कहा, अल्लाह मुस्लिम के साथ एक डील किया, वो तो जिहाद का डील है. मुस्लिम पीपल have to do jihad with non-Muslim people, and Muslim have to kill non-Muslim people. Either Muslim kill them or Muslim people will be killed. वाक़दन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात, ये अल्लाह का एक फैसला है, अल्लाह का हुक्म है. अगर मुस्लिम पीपल be killed by non-Muslim people, that Muslim people अल्लाह ने कहा ये तो शहीद है. And अल्लाह ने कहा वला तहसबन्नल लदीना, इन कुरान में है, तो कुरान में सूरा आल इमरान में है, वला तहसबन्नल लदीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता. अल्लाह के राह में जो मुस्लिम शहीद हो गया तो तुम वो मुस्लिम को डेड नहीं किया है, तुम उसको डेड मत कहो, शहीद बोलो, शहीद बोलो. वो तो शहीद, वो तो जीवित है, वो तो अलाइव, वो अलाइव है, वो डेड नहीं, वो अल्लाह के पास गया. सो हफीज साहब, आज जो हम पूरा नटशेल में जो हमने कॉन्वर्सेशन किया है, इसका जो मुझे समझ आया अभी कि इसका ताल्लुक अल्लाह से कम है, मोहम्मद की अपनी मैडनेस से ज्यादा है. और जो ये सारा जिहाद चल रहा है, ये शुरुआत भी मोहम्मद ने करी और ये अभी तक चलती आ रही है और इसका अंत भी कभी हो नहीं सकता. द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू कीप ऑन फाइटिंग विद इट. जो इजराइल आज सोच रहा है कि हमास को खत्म किया जाए, एंड देयर विल बी नो पैसेज टू हमास. तो यही आप बता रहे हैं कि भाई इसको खत्म करना ही एक तरीका है. ये दोबारा पैदा होंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती. दैट मीन्स देयर इज नो पीसफुल सॉल्यूशन. जो वर्ल्ड बोलता है कि इजराइल को एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मरने के लिए जन्म किया है इन्होंने. एंड दे हैव टेकन अ वाव that we have to kill the Jews
एंड लिबरेट दिस प्लेस, और इसको सारे को हमने इस्लामिक जगह बनाना है। जैसे भारत के अंदर भी इनको ये है कि हमने सबको मारकर यहाँ पर इस्लामिक लॉ को लेकर आना है। सो ये एक मैडनेस है, और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि इन्हें खत्म किया जाए। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। अभी ऑलरेडी हमारा कन्वर्सेशन काफी लंबा हो गया है, ऑलरेडी दोबारा से 1 घंटा निकल गया है इसको। आई हैव अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस व्हिच आई वांट टू आस्क यू। शायद एक और इसके बाद वीडियो बनाएँगे। We will cover जी, that in more details. can I say something about the some people like इंडिया का कुछ लेफ्टिस्ट का कुछ पत्रिका है, कोलकाता में एक लेफ्टिस्ट का पत्रिका है गणशक्ति। गणशक्ति का जो एडिटर है वो ऑलवेज, एडिटर और सांबादिक है, वो ऑलवेज लिखा गया है कि ये हमास का जो लड़ाई है वो तो स्वाधीनता का लड़ाई है, वो तो ये फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड दे आर नॉट जिहादी। बट हमास themselves, I have a lot of videos and all videos in Arabic language because Hamas का जो लोग है उसका language Arabic है। A lot of videos always they claim themselves as jihadi and always they said we are doing jihad and जो अब जो जंग हो रहा है वो जंग का नाम हमास का जो सामरिक शाखा, हमास का जो मिलिट्री ब्रांच है, आप इज्जुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड, वो मिलिट्री ब्रांच को वो ये अटैक का नाम दिया है तूफानुल अक्सा, अल अक्सा स्टॉर्म। इफ इज इट ए इंडिपेंडेंस माने फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, तो ये तो तूफान तहरीर नाम कहना है ना। तूफान तहरीर में इंडिपेंडेंस स्टॉर्म माने स्टॉर्म और फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, बट ये नहीं कहा, ये तो कहा तूफान अल अक्सा स्टॉर्म। इसका मीनिंग है कि हम अल अक्सा का जो जगह है वो हम चाहिए, वो जॉर्डन का भी नहीं, हम चाहिए, हमारे लिए चाहिए, फुल कंट्रोल चाहिए। इसके बीच में इन 2021 ने भी एक स्टॉर्म वो ने कहा, उसका नाम भी उसका नाम भी अक्सा का है। और जो अटैक है हमास का जो ये टेररिस्ट है वो ऑल टाइम ये मस्जिद ने चाहा है, हमको ये मस्जिद फुल कंट्रोल चाहिए जो अल-अक्सा एंड यहूदी को इसमें एंटर नहीं, मतलब ये यहूदी का नहीं होना चाहिए। जेरूसलम में कोई यहूदी का जगह नहीं है। ये इस्लाम का ऑर्डर, and this order followed by Hamas. This is on the order. That means वही है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये पागलपन कभी भी खत्म नहीं होगा। इनको कॉकरोचों की तरह ही मारना पड़ेगा। जहां पर ये नीचे बंकर्स बनाकर बैठे हुए हैं, जहां पर ये रहते हैं, वहीं पर जाके इनको खत्म करना पड़ेगा, और कोई वे आउट नहीं है। और ये कॉन्फ्लिक्ट 1400 सालों से चलता आ रहा है फ्रॉम द डे वन, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। सो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि ये फ्रीडम मूवमेंट नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये जिहादी हैं, ये जानवर हैं। इनके साथ वही हाल करना चाहिए जो इजराइल आज की डेट में कर रहा है। हाफिज साहब, यू हैव बीन वेरी वेरी क्लियर, वी आर वेरी ओपन इन टॉकिंग दीज थिंग्स। इट इज नॉट इजी, जैसे आप बात करते हैं, जैसे समझाते हैं, और इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं, बिकॉज यू स्पीक आउट व्हाट इज द ट्रुथ, यू आर नॉट शुगर कोटिंग द वर्ड्स, एंड दिस इज व्हाट पीपल नीड टू नो, द रियलिटी। शायद यूट्यूब के ऊपर इतना क्लियरली किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा आज तक कि इजराइल का और ये जो हमास के लोग हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, और इसका सॉल्यूशन भी आपने बताया है। सो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दिस ये तो ओपननेस। ये तो ओनली, देखिए मोहम्मद तो कैरेक्टरलेस था ना, मोहम्मद वेरी कैरेक्टरलेस, माने वो का कोई कैरेक्टर नहीं था। तो ये तो मोहम्मद का जो कैरेक्टर जो को माने जो एडल्टरी, यू नो, मोहम्मद जो एडल्टरी और मोहम्मद का जो रेप सिस्टम एंड मोहम्मद का जो चरित्रहीनता का जो कुफल है, ये मुस्लिम पीपल, बिलीविंग मुस्लिम पीपल, दे आर सफरिंग फॉर दैट।
And that's why Hmm. only one Muslim people के लिए only one solution. They have to out from Islam. They have to out from Islam. The Islam चलिए is the problem. Muslim not is उसका a Muslim is not a problem. Problem is Islam. इस्लाम भाई जो वो उनको बचपन से पढ़ाया गया है ये पागलपन, Mhm. ये इसी को खत्म करना पड़ेगा उसको। Yes. उसके लिए उसके लिए अब कौन सा फॉर्मूला है, इसको खत्म करने के लिए जो इसके अंदर दिमाग में इनके पागलपन है उसको खत्म करने के लिए वी विल मेक वन मोर वीडियो ऑन दैट कि हाउ टू रिमूव दिस मैडनेस फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सनस माइंड, ताकि ये भी इंसान बने, अभी ये जानवर बने हुए हैं। सो मे बी नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन record, or we might go live next time. Give me few days and we will prepare this for people, so that हो सकता है कि कुछ मुसलमान इसको सुनेंगे, समझेंगे, और they will try to change themselves, but we will put it some other time. Okay, हाफिज साहब, Okay. मुफ्ती जी, थैंक यू सो मच। बहुत आज मजा आया आपके साथ बात करके, और इससे Thank लोगों you, को भी sir. समझ आएगा। पीपल विल अंडरस्टैंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम this conflict, history, and the solutions. So I really want to thank you from my heart for taking out time today, and we will be in touch again. Thank you. Okay. Thank you, Shumet ji. Thank you Thank you so again. much. Okay.